Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद निशित। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक हरवीर सिंह। हरवीर जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। Headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays foundation stone of multiple health sector projects worth nearly 13,000 crore rupees today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in 8th edition of Future Investment Initiative in Saudi Arabia, and domestic benchmark indices end with gain. Sensex adds over 360 points, Nifty settles over 24,450. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। और घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 360 अंक से अधिक बढ़ा और निफ्टी 24,450 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। इससे हर आय वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स में सुविधा और सेवा विस्तार का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल है। Harveer ji, I guess the Prime Minister, Honorable Prime Minister, extending this Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to senior citizens beyond 70 years, and the point which is to be marked here is it's regardless of the age here. How important you say this one? It's very important health initiative, particularly for the elders in the society. One thing is very clear that the number of person in India now, in our population percentage of senior citizen is going up. And the way you are going up in age, the cost of health is also increases for that. So it is a burden on common man. Correct. Through this kind of initiative, that burden will come down. And we have seen this Ayushman Bharat a big success among the poor of the society. They are able to access the quality health facility or the treatment to good quality institution or where is the facilities available in hospital across the country. Now, with this new, basically the expansion of the scheme for the senior citizen, regardless of the age or all these things, I think it is very important, and I think it was required. It's a very big initiative for the common
man in the country, particularly those who are in the rural areas or low income group. So I think this access to the quality health will change their life. Absolutely, Harveerji. You mentioned about people living in the rural areas and also in the lower income group. But the point to be noted here is that it's regardless of the age here. So That's right. Because you see, when even if you want to buy an insurance product, after certain age, the cost of the insurance goes up. If you want to buy some private or health insurance coverage, the cost goes up. Right. And there are certain conditions there. So even if you want to buy at a particular age, so it is very difficult for you to buy a insurance product. But when it is a universal thing, is coming from the government side. So now I think it is it was very much required, the need of the hour, and it is being fulfilled by the government. That's why, and without any cost or any financial burden. So I think it's a great initiative. Absolutely. Now, on to some other news. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal will be on a two-day visit to Saudi Arabia beginning today. The visit aims to further deepen the strategic partnership and explore new avenues of trade, investment and economic cooperation between India and Saudi Arabia. During his visit, Mr. Goyal will also participate in the 8th edition of the Future Investment Initiative in Riyadh. Now we go over live to our special correspondent in Dubai, Vinod Kumar, for the latest updates. Vinod. Yes. Yeah, good evening, Vinod. Vinod, can you briefly tell us about the minister's visit and meetings and other engagements scheduled to take place? Sure. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will reach Saudi Arabia on a two-day visit to Saudi Arabia starting today evening. But this isn't just another diplomatic visit. Minister Goyal will be stepping into the global stage at the Future Investment Initiative in Riyadh. This initiative is often called the Davos of the Desert, where the world's financial elite gather to shape tomorrow's economy. The minister will also participate in Diwali Ulsav and Riyadh's Lulu hypermarket. He will also unveil the One District, One Product at the wall of the Indian Embassy in Riyadh to showcase our diverse craftsmanship. Further, many crucial diplomatic meetings also await, from energy transition to digital transformation. Minister will engage with 4 key Saudi ministers steering the course of the bilateral trade and investment. The highlight of his visit is co-chairing of the second ministerial meeting of Economy and Investment Committee. This is a crucial meeting under the India-Saudi Strategic Partnership Council. These are the broad contours of our CAM's visit to the Saudi Arabia. Absolutely, Vinod. The minister will also participate in the 8th edition of Future Investment Initiative, as I mentioned. Now, can you tell us something more about this initiative? Oh, sure. As I mentioned, this is also called the Davos of the Desert. This Future Investment Initiative was debuted in 2017 to showcase the de facto ruler of Saudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman's dream of diversifying the economy of the kingdom away from oil. And it promises to be a melting pot of innovative ideas, bringing together global leaders like our minister, entrepreneurs, political leaders, media and decision makers in finance, artificial intelligence, and more importantly, sustainability, energy security. Earlier this month, the CEO of FII, Richard Achias, in a news conference told that this gathering is meant to focus on politics, but instead should tackle more on the big picture investments to build a better world. Basically, this is to steer away Saudi Arabia from over-dependence of oil. As we know that the world is moving faster away from oil, electric mobility, sustainability, and to keep the temperatures below 1.5 degrees. When these kind of more important paradigms come, yes, we have to move away from dependence on oil. And this FII is an initiative to bring together world leaders to diversify Saudi Arabia's economy. Absolutely. So Davos of the Desert, quite an interesting nomenclature, Vinod. So finally, can you tell us something more about some of the focus areas for collaboration between India and Saudi Arabia during this visit? As you gave on the intro of this talk, the minister will hold bilateral meetings with key Saudi ministers, including his counterpart, Minister of Commerce, Minister of Industry, Minister of Investment, Minister of Energy, to discuss various collaborative efforts in energy transition. Both our countries are trying hard for energy transition, the digital transformation, and trade facilitation. He will also co-chair on the second ministerial meeting of the Saudi
Strategic Partnership Council, focusing on sectors like agriculture, then food security. As we know that Saudi Arabia has already invested so much of money in India's agriculture sector, then technology and infrastructure or other areas of interest. I must tell that Saudi Arabia is India's fifth largest trading partner, and India is Saudi Arabia's second largest trading partner. The numbers tell a really compelling story. Bilateral trade has soared into $43.3 billion in the past fiscal year, with Saudi Arabia cementing as its role as India's third largest crude supplier. Around 17% of India's total crude imports come from Saudi Arabia. So when we analyze all these aspects, it's very crucial that India maintain a very good investment and economic relationship apart from the diplomatic relationship with Saudi Arabia. It's not just about oil. This Saudi Arabia's public investment fund has strong confidence in India's future, and nearly 3,000 Indian companies like chains like Tata, L&T, had made their mark in the kingdom. So at this heart of this bilateral relationship is a strategic partnership council, where he is going to have this ministerial meeting tomorrow. And way forward, we have a lot of other areas also coming to the picture. To say example, defense. Earlier this year, history was made in our own desert in Rajasthan, where both nations conducted first ever joint land force exercise. So it's a pretty huge road ahead for India and Saudi Arabia in both diplomatic and economic fronts. We can be rest assured that this meeting between our commerce minister and key ministers in Saudi Arabia will be key in unlocking our partnership for the future. Thanks so very much, Vinod, for your valuable input. So that was our special correspondent Vinod Kumar joining us live from Dubai. अब नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 364 अंक यानी 0.45% की तेजी के साथ 80,369 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 128 अंक यानी 0.52% की मजबूती के साथ 24,467 पर रहा। बात करें बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो दोनों ही सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही 0.7% से अधिक की तेजी देखी गई। The domestic benchmark indices today extended gains for the second straight session, recovering from losses secured in the intraday trade. The BSE Sensex climbed 364 points or 0.45% to close at 80,369, while the National Stock Exchange Nifty advanced 128 points or 0.52% to settle at 24,467. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, it ended in the positive territory. The mid-cap index and the small-cap index both rose over 0.7%. In the Sensex index, 16 out of the 30 companies ended in positive territory. In the top gainers, SBI Bank climbed more than 5%, ICICI Bank gained over 3%, and Bajaj Financial Services added more than 2%. Conversely, in the laggards, Maruti shed 4.1%, Tata Motors lost over 4%, and Sun Pharma and Bharti Airtel both fell over 1.6%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 14 out of 20 sectors logged gains. In the top gainers, BankX added 2.2%, Financial Services increased 2%, and Realty gained nearly 1.5%. And in the top laggards, Auto declined over 1.5%, Tech slipped over 0.8%, and telecommunications fell 0.7%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,242 companies advanced, 1,623 declined, while 126 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 40 companies hit their 23-week high, while 72 hit their 52-week low. Harveer ji, second session, straight session yesterday and today. Are we seeing the greener shoots coming up, especially when we see the carnage happening over the past 10 days or so? Actually, in the recent past, what we have seen, a big sell-off by the FPIs. And in October, I think it's a very high number. They sold. More than 1 lakh crores in October itself. More than 1 lakh crores. Yes. Yes. So it means they are booking good profit, because market has gone up very sharply in the last few months, if we see. But here some domestic institutions are buying. They must be seeing an opportunity for value at this stage. But I think we have to wait and watch for the market
movement, which direction it will go, because what we are seeing, particularly companies like auto stocks are not doing well because sales are not good. Despite being the very important festive season, yes. Festive season in the last 2-3 months is the festive season. When it starts with Ganesh Chaturthi and we are completely. And also the marriage season approaching. Diwali. Then Yes. after that marriage season will approach, but Yes. inventory level is very high. But same thing with the FMCG companies are also not coming up with the good profits. जी. Ultimately, market also we have based on the results of the companies. जी. So, but good thing is that, but Indian stock market has a very broader base now due to interest of the middle class into the stocks and the way they are investing through institutions or SIPs or like that I think, and definitely market also has given good return in the this thing on the investment. So that's why that interest is keeping the market at a reasonable level, and it will depend that at this level, if people thinks that there is an opportunity to enter into the market to buy the stocks at the value which may give good return in future, but it also will depend on individual companies and sectoral performance, which we are seeing even today. Like banks stocks did well, and if you see the results of the banks, they are having good profits also. The financial services, realty, Yeah. all of them gained today. Yes. Yes. हरवीर जी, अगर आपने बैंक्स की बात करी है, लेकिन अगर हम एक खास बैंक में भी अगर कुछ खास बैंक्स की बात करें, स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है अगर हम बाज़ार की भाषा में बात करें, तो उसका क्या कारण रहा कि वो अभी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे और काफ़ी हद तक टूटे हैं? देखिए, एक तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, देखिए हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, पहले जो बैंक्स होते थे जिनको हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोलते रहे, एक ही कैटेगरी होती थी. फिर आरबीआई ने बैंक्स को कैटेगराइज कर दिया कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो सकते हैं, आप पेमेंट बैंक्स हो सकते हैं. तो इस तरीके से जो बैंकिंग लाइसेंस का एक रिफॉर्म आया था कुछ साल पहले, उसमें कैटेगराइज किया गया बैंक्स को. सो अब उसमें क्या है कि काफी सारे बैंक्स आए भी और उनमें कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, बट ये सही है कि अगर आप देखेंगे वॉल्यूम के ऊपर, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आपका वॉल्यूम अच्छा है और आपके मार्जिन्स उतने ही हैं, सो जिनका बेस बड़ा है वो अच्छा करते हैं. जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके साथ एक ये भी होता है कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड भी ज्यादा होता है. सो एंड व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर दे सर्विस इट ऑल्सो, ये भी होता है, क्योंकि जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके पास बड़े जो बोरोवर्स भी बड़े होते हैं, तो जो वॉल्यूम मिलता है उसमें, और उनका बेस भी बड़ा है, उनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड आप कहेंगे या जो भी उनका जो फुटप्रिंट्स बड़े होते हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ दोनों चीजें हैं. एक तो टू बी फ्रैंक, अभी भी लोग देखते हैं कौन सा बैंक है. व्हेन यू वांट टू डू बिजनेस विद बैंक्स और टू गो फॉर डिपॉजिट और इवन फॉर बोरोइंग्स, तो अभी भी जो डोमिनेट करते हैं वो बड़े बैंक्स करते हैं. छोटे बैंक्स को अभी ट्रस्ट गेन करना है, ये भी एक फैक्टर है. लेकिन इसमें इसीलिए वो क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज दे नीड मनी. अल्टीमेटली अगर आपके पास डिपॉजिट्स हैं तभी आप लैंड कर पाएंगे, तभी आप उसके ऊपर आमदनी आपकी ज्यादा होगी. अदरवाइज, और फिर ये भी है कि अगर आपको मार्केट में भी बोरो करना है तो वहां पे फिर आपके साथ लिमिटेशंस है नए प्लेयर्स के साथ. सो दैट इज द रीजन. अब उसमें फिर क्या है कि देन वो फिर उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पे भी जाता है. जी. Harveer ji, you were mentioning about the flight of the FIIs, FPIs happening from the Indian markets, Indian capital markets. Now, how much of the China factor is playing in here? Because as we heard that in the past some time the Chinese government has put in that kind of a stimulus, pumped in that kind of money into it. Do you see the FPIs and FIIs actually taking the flight from the Indian markets to the Chinese market? Yes, there are indications that they are investing in the Chinese market. They must be seeing that value for their investment in that market. And definitely because you know that
there is a competition for attracting the capital in the global economy, and the emerging economies like India, China, South Africa, Brazil, it is a category, and Russia, particularly for these kind of things. So, and there are developed economies like Japan or US or Europe, countries in Europe. So that's why always there are basically, if we see the margins are not very high in the developed economies. Whenever they see that there is good opportunity to make money, so these big institutions comes to these markets, like we were discussing about this emerging economy market. They comes to India. India was a very attractive market for them. So they go to China. China was always a very big place for the investment of these big companies, but Chinese economy was cooling, opportunities was low, but now and it is China is going to push how to push the number of the economy for better investment opportunity, as well as to give more incentive to the industry. So everybody knows that China is the factory of the world, and when there are some pressure from big markets like US or and some geopolitical tension also playing a big role in the on this basically to disrupt the markets, like what is happening in the Middle East and these countries. This Israel is conflict with the other countries, like we have seen recently the with Iran, and the Gaza is continuing. Lebanon and all. Lebanon is there. That is also affecting the world economy, because the movement of goods is also being under target for Houthis or so. Supply chains. So then ships takes longer route. It adds the cost. It adds the time also. So due to these factors are also affecting the global markets. हरवीर जी, जब हमारे कॉलिंग डेज के शोज होते हैं तो लगभग पूरे देश भर से हमारे पास कॉल्स आते हैं, और उनमें से कई सारे श्रोताओं का ये सवाल रहा है कि जो स्पेशली पीएसयू बैंक्स पीएसयू कंपनीज में, और साथ ही साथ जो डिफेंस सेक्टर, एक बड़ा रुचि रही थी रिटेल निवेशक की इन दोनों सेक्टर्स में, उन्होंने काफ़ी निवेश किया हुआ था, तो उनका अधिकतर सवाल रहता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली डिफेंस सेक्टर की अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी हद तक टूट चुके हैं, 40 से 50% तक भी वो नीचे हैं। तो क्या अब उनमें एवरेज डाउन करना चाहिए, या क्या अब स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उस पर आपके क्या विचार? देखिए, एक तो डिफेंस सेक्टर में अगर हम देखें, जो हमारे यहाँ प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है जी, तो उसमें अभी वो एक नया सेक्टर मैं कहूँगा एक तरह से। पहले डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट का दखल उतना नहीं था, बट गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, तो लेकिन उनका कंपनियां आई हैं, बट उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, फिर उनका बिजनेसेस किस तरह से डेवलप होंगे। अभी भी डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज की बड़ी कंपनीज हैं उनका दखल सबसे ज्यादा है। आप देख तमाम सारा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफेंस नाउ। तो या हैवी मशीन्स की हम बात करेंगे डिफेंस में, आप फाइटर्स की बात करो या और प्रिसिशन मिसाइल सिस्टम पे आप जाओ, वो सब जो है, तो उसमें अगर अभी भी आप देखेंगे तो वो अमेरिकन कंपनीज हों या यूरोपियन कंपनीज हों, सो चाइना ने ज्यादातर अपना किया है, तो उनके पास काफी सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस मतलब उनका है। हमारे यहाँ एक मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर्स बना रही है टू अट्रैक्ट कि भाई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आए, बट आई थिंक अभी इस सेक्टर को मैच्योर होने में और टाइम लगेगा, मेरा ये मानना है। और जैसे आपने जिक्र किया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनमें क्या होता है कि उसमें स्टॉक्स का मूवमेंट कई बार काफी कम होता है। सो जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा था तो वहां लोगों को वैल्यू दिखता है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में मूवमेंट ज्यादा होता है, और वहां पर कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं ऐसे जो है, क्योंकि जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जो पब्लिक सेक्टर्स है उनमें बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हो सकते। उनका एक सिस्टम काम तक करने का एक तरीका होता है जिसमें बहुत सारा अकाउंटेबिलिटी और जो गाइडलाइंस होती हैं। तो दैट्स वाई मार्केट में अगर आप देखेंगे, बैंकिंग वगैरह को छोड़ देंगे तो ज्यादातर में ये प्राइवेट सेक्टर जो है उनके मुकाबले जो पीएसयू जो है वो उस तरीके से बहुत स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती। जी,
अब नजर डालते हैं रुपए पर। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बिना किसी बदलाव के साथ 84 रुपए 7 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 104.41 के स्तर पर था। एक शॉर्ट कमेंट आपका रुपए पर, हरवीर जी। देखिए, रुपया थोड़ा सा डेप्रिशिएट होगा, हम देखें पीछे, और रुपया अगर कमजोर होता है तो उसका इम्पैक्ट काफी आता है, बिकॉज हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। ये बात सही है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए रुपया कमजोर होना फायदेमंद होता है, बट इसमें काफी कुछ यही है कि जो डिमांड है उसको, डॉलर डिमांड कैसे मूव करती है उसके ऊपर है। और अगर हमारा जो ट्रेड के सरप्लस बढ़ेंगे या ट्रेड जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो उसमें शायद रुपए को और बेहतर पोजीशन मिल सकती है, बट प्रेशर थोड़ा रुपए के ऊपर है, ऐसा मुझे लगता है जी। And on to some other stories. The Prime Minister of Spain, Pedro Sanchez, has asserted that Spain and India share strong ties and both the countries can collaborate to strengthen them further. He inaugurated the 4th Spain-India Forum in Mumbai today. The forum was themed Spain-India Partnership, and amid geopolitical and technological challenges, new horizons, new possibilities. Addressing the gathering, he stated that the two countries seek more business, greater investment, increased cooperation and enhanced exchanges, and he's optimistic about this potential. Both the leaders discussed a range of bilateral issues during delegation-level talks in Vadodara, Gujarat yesterday. In a joint statement, the two leaders reaffirmed their commitment to strengthening the India-EU strategic partnership and to advancing the EU-India triple negotiations of Comprehensive Free Trade Agreement, Investment Protection Agreement and Geographical Indication Agreement. Both leaders welcomed the establishment of a fast-track mechanism and to facilitate mutual investments in India and Spain. The two leaders expressed satisfaction at the signing of a Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of rail transport and the Agreement of Cooperation and Mutual Assistance in Customs matter. And in some other stories, the Prime Minister today distributed more than 51,000 appointment letters to the newly appointed youths in various government departments and organizations. Speaking through video conferencing, the Prime Minister said that the government is committed to provide maximum employment opportunities to the country's youth. आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। 5 प्रमुख सूचकांकों में से 4 आज बढ़त के साथ बंद हुए। जापान का निकेई 0.7% बढ़ा। हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग 0.5% की तेजी देखी गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% के फायदे में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.17% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 1% से अधिक के नुकसान में रहा। दूसरी ओर देखें तो यूरोपीय शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.33% के फायदे में रहा। जर्मनी का डैक्स 0.25% बढ़ा और लंदन का फुत्सी 0.09% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। And moving on to the US markets, the US stocks ended in positive territory ahead of a packed week of earnings from mega cap companies, bunch of economic data and US presidential polls. The Dow Jones Industrial Average gained over 0.5%, while Nasdaq Composite and S&P 500 both added over 0.2%. And on to crude, the oil prices gained today, supported by the U.S. plan to buy oil to boost its strategic petroleum reserve. Brent crude was trading 1.3% up at $72.35 per barrel, and WTI crude gained 1.4% to trade at $68.32 per barrel when reports last came in. सराफा बाजार में अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.3% बढ़कर 78,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.89% बढ़कर 98,520 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। हरवीर जी, शॉर्ट कमेंट आपका गोल्ड पर, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्या आपके विचार? देखिए, गोल्ड ने तो काफी सारा गेन किया। अगर हम देखें, गोल्ड प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं और आज धनतेरस भी है और ऐसे में आज के दिन लोग गोल्ड खरीदने को शुभ मानते हैं जी। लेकिन प्राइसेस काफी ज्यादा गई है। जिन्होंने गोल्ड को एक एसेट की तरह से खरीदा है उनको बड़ा फायदा गोल्ड में कुछ अगर हम देखें पिछले 1-1.5 साल में काफी बड़ा फायदा देखने को जी। तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। हरवीर जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं सभी त्योहारों की, और श्रोताओं आपको भी धन्यवाद। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Thank you, Harveer ji, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays foundation stone of multiple health sector projects worth nearly 13,000 crore rupees today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in the 8th edition of Future Investment Initiative in Saudi Arabia.
And domestic benchmark indices end with gains. Sensex adds over 360 points. Nifty settles over 24,450. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, goodbye. Market Mantra.